Assalamu alaikum, everyone. This is Sidra Iqbal here, and it's my pleasure to welcome you all. I believe that there are many of you who are joining us right now live in this session, and we're also recording it, so you can find it in the various, our socials on LinkedIn, on YouTube, and we're trying to reach out to as many people who can benefit from this session as possible. Of course, अगर आपके इर्द गिर्द भी आपके ecosystem में there are others who can benefit from it, please feel free to forward it to them. As you know, we are, coming up with something really exciting. I've been hearing very good things about it. This is Bazaar at ARY, and this is going to be a dream come true for a number of entrepreneurs, startups, people with fantastic ideas who'd like to scale up and are looking for the right kind of partners to understand. Moreover, I think this is also a very, very unique idea because what is making Bazaar at ARY very unique is that they are just not going to get you and put you in the hot water. They are giving you once in a lifetime opportunity to actually groom yourself, hone your idea, so you'll have mentorship available to you. This, by the way, is a co-creation by ARY Digital, always at the helm of bringing wonderful ideas to the audience in Pakistan and world over. And also Park Launch, that has been a facilitator and an accelerator, and somebody who have really developed the ecosystem and the homegrown talent of Pakistan and connected them with VCs around the world, really allowing them to scale up and to raise funds for themselves. So congratulations to Park Launch and to the ARY Digital for this fantastic idea. Representing both these dynamic organizations, of course, we have Mr. Salman Iqbal here with us. Salman Bhai, thank you very much for being here. We have Jerjay Seja, of course, representing, you both are representing ARY Digital. We also have Ali Fahad with us representing Park Launch. So welcome, gentlemen. It's a pleasure to have all three of you here. And we have around 80 plus participants who I understand are some way or the other connected with the startup scene. So let's get right into it. Salman Bhai, I know ARY is always coming up with brilliant ideas, but what's the thought behind Bazaar? And there has been a lot of comparison with Shark Tank. How fair is this comparison? Uh, Sidra, ideas are always very centric, right? So people create ideas from ideas. Music was created from somebody who made music. So this is how ideas evolve. So we evolved this idea of Shark Tank, and we have been, as a community, as a Maiman community, we have been talking about, investing in the community, investing in the country, investing to other countries. So this is something that Ali and JJ came to me and said, we should start a program where we should get all these budding stars, startup companies to on our platform and get them grooming together and move with an idea. So I say, what, that's a good idea. The difference between the other idea and our idea is, of course, our idea is more involved. What we have done is like, so see, Pakistan is not a is not a country where people are groomed towards investment and entrepreneurship so much. We have our small businesses, so we said we have to mentor these startups before they go into the incubation stage. So we should, we should have mentors who actually get them ready and prepared for the screen. को करते क्या है कि they just come in with a small idea, with a great idea, but they don't know how to present the idea. So what happens if they can't present the idea in 3 minutes? Which is it's the most saddest thing to boil your whole life idea in 3 minutes. And if you fail in that 3 minutes, you just lose the chance of getting a great idea up and running. So we said we'll have mentors, those mentors who actually have, done a lot of for the community, done a lot of for their own businesses. Come and mentor them. So get them ready for the screen for the 3 minutes, and then present it in front of the panel for investment. Wonderful. And I also understand that the deadline for sending in your entries has been extended. Now it's till the 1st of August. JJ, it's already garnering a lot of interest. But दो तीन सवाल लोगों के जहनों में थे कि does this business idea necessarily has to be something IT related? Does it have to be e-commerce? Does it have to be an IT solution? या एक जबरदस्त business idea लेकर वो बाजार में आ सकते हैं? You asked me this question. Yes, JJ.
Okay. Ajay, first of all, thank you for being here and helping us out and getting all these information out and जो भी clarification लोगों को चाहिए. So thank you very much for being here. एक आपने इससे पहले जो सवाल किया था उस पर मैं थोड़ी सी एक चीज ऐड करना चाहूंगा. फॉर्मेट्स दुनिया भर में बहुत सारे हैं, बट ARY being a pioneer in its own original formats, we have been globalizing the concepts and we know that everything जो एक इंटरनेशनल फॉर्मेट का बन चुका है वो जरूरी नहीं है पाकिस्तान में उसी तरह चले, या पाकिस्तान का Yes. जो इकोसिस्टम है वो उसको सपोर्ट करता हो. सो विथ वी कैन नॉट से दैट दिस इज नॉट इन द सेम जॉनरा. आपके जिस तरह के बहुत सारे शोज हैं जो इस फॉर्मेट में फॉलो करते हैं, जस्ट नॉट शार्क टैंक बट देयर आर मेनी अदर्स. बट हमारा जो है जिसकी यूनिक बात ये है कि it's our own format, and it's based on the feedback that we've been getting for last 5 years, because we've been working on this concept for last 5 years, and we were looking Mm. for the right partners, right people that can take care of it. Because Pakistan में प्रॉब्लम ये नहीं है कि टैलेंट नहीं है, प्रॉब्लम ये है इनको ग्रूम करना है. सो Yes. दैट्स द मोस्ट क्रूशियल थिंग. एंड उसके लिए जो आपका सेकंड सवाल है वो ये है कि हम लोग कैसे आइडियाज को करेंगे. तो दैट्स वायर वी हैव केप्ट द मेंटरशिप प्रोग्राम. इफ यू हैव एन आइडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह के जितने भी फॉर्मेट्स होते हैं वो मेनली रिवॉल्व करते हैं established businesses जो स्टार्ट हो चुके हैं, जो एक लीगल उनकी फॉर्मेशन है. बट व्हाट वी हैव एडेड इन दिस वन is that we will give room to the new ideas, new people who will come in, but they need to have a business plan. ये नहीं होता कि सिर्फ Mm. वो थॉट है और थॉट लेके वो आ जाएंगे, नहीं. आपको सिर्फ बियॉन्ड से काम करना पड़ेगा, आपका एटलीस्ट पेपर वर्क रेडी हो. इफ यू हैवंट Mm. फॉर्म्ड अ कंपनी, नेक्स्ट 3 मंथ्स में जो मेंटोर्स आपके साथ असाइन होंगे उनका काम ये होगा कि आपको उस लेवल तक ले आए कि जब कल आप गुरुज के सामने जाएं और गुरुज को पिच करें. सो गुरुज जब आपको एक इन्वेस्टमेंट ऑफर करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ डालेंगे, वो पर्सनल अकाउंट्स सही. में नहीं आती. सो वो सारी चीजें करने के लिए आपको एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए, वो आपको एक पूरी गाइडेंस चाहिए. और वो आइडिया टू फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी टू हाउ टू पिच, वो सारा इस फॉर्मेट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है. सो आई Super. थिंक दैट Super. आंसर्स योर क्वेश्चन. Absolutely, it does. जी. Sidra, जी सुमित. your answer is yes. It's not only an IT solution based bazaar. Mm. It's an Mm. idea. It's a melting pot of an idea. Whatever idea you have, a business Mm. idea. You know, you know, we'll have to groom that pre and post. The thing about this idea is we're not only grooming ideas pre, we also have to groom the ideas, incubate those ideas post. So these are two Absolutely. differences. We have to, for example, Kalam बैठे हुए थे with Momin. You know, Momin has done a lot of startups. He's also advising Park Launch. He's advising us on Bazaar. And he said, Salman Bhai, we should not only have mentors who can bring them on TV and groom them and become TV personalities or present the ideas. We should also have gurus who will have strategic alliances, not only investments. So they can take these young entrepreneurs or these young ideas. Mm. जरूरी नहीं कि वो entrepreneurs young ही हो, ठीक है. The Yes. young ideas far off, so at least ये जो companies हैं, ये जो ideas जो investment ले रही हैं, Mm. कुछ अरसे बाद ये इतने बड़े हो जाए कि ये investment कर रही हो on Super. startups. So that's the whole concept of bazaar. कि ये बाजार है, बाजार में छोटी दुकानें भी होती हैं और बड़ी दुकानें भी होती हैं, ठीक है ना. बिल्कुल. And every small shop wants to grow into a big supermarket or a big stores. So and they want to take over other stores, they want to invest in other ideas. So that's what our idea is, to make these entrepreneurs these ideas, buy more ideas and bring them to that level. Absolutely. और अली इसमें आपका क्योंकि इतना you've had so much experience. IT में of course people are sometimes able to come up with a more efficient system. यानी हो सकता है आइडिया बहुत यूनिक ना हो लेकिन उसका प्रोसीजर उसकी operations किसी ने बड़ी जबरदस्त सोच ली हो and they've cracked it and they've made it far more profitable. So what are you looking forward to and what are your aspirations from Bazaar at AIY? What we want to do is we want to, show successes, right? We want to back good startups. I think, one of the things that we have seen with other shows globally, by the way, typically what happens is it's run like, any other show, like a singing show or,
people come and show their talent, and somebody says, I'm going to invest money, my hard-earned money, and after the show, they do the due diligence part, right? हम लोग क्या कर रहे हैं कि when an entrepreneur is pitching, so just to, and then I'll answer your question later, but so when जी the entrepreneurs are pitching, we have identified the mentors who are some of the very top investors and entrepreneurs in Pakistan and globally. So just to give you an idea, like Ali Khan Tareen is one of our mentors. On any other show, he probably, could be an investor, right? We have Asar Malik. He just announced a $200 million fund for gaming with Malala. Mm. Ehsan Saya from Daraz. So these are our mentors. They'll spend 3 months before the entrepreneur comes and pitches in front of the gurus. Now, just like Salman Bhai said, the idea is the gurus just don't bring money; they bring, they bring in the money, and also it's a strategic investment, right? So they will help scale up the company. But beyond those two, another unique part of our show is to back these entrepreneurs more. And we feel within between ARY and Park Launch, we can help these companies scale in Series B and beyond. As the company grows, Mm. आपने पहला टिकट तो डाल दिया सिद्रा, लेकिन बाद में क्या होगा when they want to raise 5 million, 10 million, $50 million? There are not that many VCs. There's no VC I know in Pakistan who can invest in Series B, frankly speaking, right? And beyond. Or how would they help with the go-to-market, right? Go-to-market kya hoti hai in any accelerator program? You need to connect them with the potential clients. So with Park Launch and ARY, we also are working on a fund together. हम लोगों ने start किया बात करना with Salman Bhai and JJ that we'll start with, you know, around 20 crore रुपए. पहले 10 crore की बात हुई, 20 crore की बात हुई. Now we have soft commitments of close to 50 crore. So, and frankly speaking, the show hasn't even started yet, like in the true sense, right? So when it goes on floor, we are expecting hopefully it will become something even bigger. So one is Mm. we are running it as an accelerator program, जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता. So we Mhm. have 3 different phases. You're going through 3 months of mentoring. So even if you don't raise money on the show, you have gotten the mentoring, right? And maybe you didn't make it to the show. Let's say you got the mentoring, you came on the show, you got 70 million eyeballs through ARY plus mentoring for 3 months. Then you can get funding from the gurus. And then if you get really, really lucky, you can also have ARY and Park Launch invest in you. So that's the unique part. Now, we are sector agnostic, right? The advantage of investing in IT company is scalable. You don't have to go through FDA approval with food or medicine and things like that, or it's not as resource intensive. So I think for bringing our focus is to inspire, and just like JJ and Salman Bhai were saying, we want to inspire people. If it's an idea early stage or later stage, we think we can bring a lot of value. Like I said, connecting you with the right mentors, Mm. connecting you with capital, the go-to market. So even companies who are slightly more advanced, if they're interested, please feel free to apply. So and they can be around any sectors, right? So it doesn't only have to be IT, but obviously IT is more scalable, and that's what the strength with Park Launch is. But within ARY network and even in our wider network, we have a lot of people in various sectors. So I don't know if I answered your question. I think you should be giving a master class in pitching because you in the last 3 minutes you were able to put together all the advantages and why people should be coming in, and I'm feeling the excitement. I'm sure people are as well. JJ, there So are Shida, lots and lots of questions I coming just in. want to Ji, add ji. something here. So we have so in any accelerator program or Hmm. venture builder, right? Think of it, there are three things. One is co-build, invest, and go to market. There are Hmm. people on the shows which can put money in and maybe open up the doors, right? If they have the right time. What we are doing is we're giving the eyeballs that nobody has it in Pakistan. We're giving them 3 months mentoring from some of the very, very best people. And then we're putting the money both from, Salman Bhai's hard-earned money and his network. He's very modest, but he's chairman of Global Maven organization, right? So pretty much, we all know, how strong that community is. Within Park Launch, हमारे कुछ 4 lakh super follower हैं. We have raised $120 million. We're probably the only one who has helped raise money at Series B for anyone. Saudi Aramco White Ventures has invested through us. So some of the biggest VCs globally have invested through Park Launch. So or through our network. So we really think, I think this is
But it's a no-brainer for I think somebody not to that apply. that is why they say your network is your net worth. And here we have Pakistan's best and the biggest network, ARY, becoming your partner and giving you wonderful opportunities. But JJ, you're known for giving an ARY touch to these ideas. जैसे अभी सलमान भाई कह रहे थे कि ideas evolve करते हैं. What is going to be unique about it? And let me also address the elephant in the room. बाकी सारे benefits अपनी जगह कि जी mentoring भी मिलेगी, आपको eyeballs भी मिलेंगी. पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे क्योंकि ये सबके जहन में यही सवाल है इस वक्त. अच्छा सिद्धार्थ, जो बात आपसे मैंने की ना कि 5 साल से हम इस पे काम कर रहे थे, वो एक ही चीज थी हमारी जो हम रुके हुए थे, वो ये था कि डिफरेंस बिटवीन अस एंड अदर्स इज दैट अगर हमारे चैनल पे जब कोई इस तरह का प्रोग्राम चलेगा तो पीपल विल गो आफ्टर ARY कि जी आपने कमिट किया था. सो वी द डिफरेंस इज दैट हमारे जो गुरुज, द इन्वेस्टर्स हु आर गोइंग टू बी इन द फाइनल शो, जिसके नाम अभी हमने नहीं किए, उनकी वन ऑफ द प्री requisites दैट वी हैव इज दैट दे हैव टू पुट द मनी अप फ्रंट. बिकॉज होता क्या है कि यूजुअली इस तरह के जितने भी पिचिंग फॉर्मेट्स होते हैं उसके अंदर जो स्ट्राइक रेशियो होता है वो 40% होता है. पाकिस्तान में एक इवेंट जो हुआ है उसका सिर्फ 4% आया है, जो आई हर्ड अबाउट इट. आई डोंट नो इफ इट्स करेक्ट और नॉट, बट दैट्स व्हाट द मार्केट ग्रिपलाइन इज. नाउ जी इफ दैट इज द केस, वी डोंट वांट दैट टू हैपन इन पाकिस्तान, बिकॉज हमारे लिए क्रेडिबिलिटी और ARY का नाम बहुत इंपॉर्टेंट था. सो वी बीन वर्किंग ऑन दैट. सो द गुड थिंग इज दैट there is first that all those gurus who will be there, who will be in the final seat, they will be putting money there, so they have to make that payment. तो वो अब उसकी लॉजिस्टिक्स पे काम हो रहा है, लीगल चीजें सारी बन रही हैं. अब वो एस्क्रो अकाउंट होता है या उसके अंदर किस जी तरह करते हैं, बट दे विल हैव टू इन्वेस्ट. और उनके ओके पास वो ड्यू डिलीजेंस का एक एक्सक्यूज होता है कि जी वो बाद में हमने ड्यू डिलीजेंस की, एक आदमी आया था उसने 15 मिलियन की सेल बताई, बाद में पता चला वो 1.5 मिलियन की थी. तो वो जो जी पहले मेंटोरशिप का प्रोसेस है, वो पूरा प्रोसेस उसको क्लियर कर देगा कि जी आपकी सेल 1.5 मिलियन की है, 15 मिलियन की नहीं है. सो जो इन्वेस्टर या गुरु बैठा होगा उसको पता होगा मैं क्या इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ. And ओके then the fund that we have created between AROI and Park Launch, and I think it's gonna be much bigger because the more we अभी अभी हम तो फर्स्ट फेज में है, जब हमने अभी तक स्टार्ट ही किया, सर वी जस्ट डूइंग द रोड शोज राइट नाउ. एंड अभी तक हमारे पास 1.5 मिलियन से ऊपर की कमिटमेंट्स आ गई हैं, एंड वो फंड प्रॉपर अभी रजिस्टर हो रहा है, तो उसके अंदर आएगा. तो वो उसके चीज जो सबसे हाईलाइट वो है, वो ये है कि other than gurus, this fund will also come in and back those startups. सो बिल्कुल वो सही. सबसे बड़ी चीज है जो किसी के पास नहीं होती, कि आपको गुरुज तो जो इन्वेस्टमेंट कंफर्म करेंगे वो होगी होगी, बट एट द सेम टाइम ARY Park Launch Fund will also come in and invest, and now that they have double the investment. It's बिल्कुल obviously सही. dependent on कि अगर वो हमारा फंड उसको चाहेगा उसको करना, या उसमें they think it's worthwhile investing. It's not compulsory, but आई थिंक जब वो हम लोग मेंटोरशिप के प्रोसेस गुजरेंगे तो वी विल हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट गोइंग So what इनटू I'm दीस स्टार्टअप्स. understanding is कि even before you land into the mentorship thing, आपकी due diligence होगी. तो कहने का मकसद ये है कि अभी जितने लोग extension वाली deadline तक भी apply करेंगे, your team is going to vet them ताकि उनके तमाम claims सही हैं. फिर उसके बाद वो second phase में mentoring में जाएंगे. सलमान भाई, there's a very interesting question that अरे has सॉरी, come मैं up for इसको क्लियर you. कर दूं. जी जी मेंटोरशिप से पहले नहीं, ड्यू डिलिजेंस मेंटोरशिप के दौरान होगी. दौरान अभी होगी. सिर्फ उनके आइडियाज, उनकी चीजों को स्क्रूटनाइज करके शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे. देन दे विल बी गिवन, दे विल बी असाइंड विद मेंटोर्स, एंड मेंटोर्स विल गो विद देम, और उसके अंदर ड्यू डिलिजेंस का एक बहुत बड़ा पार्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा. ओके गॉट इट. जे ये जो मेंटोरशिप वाला पार्ट होगा जिसमें उनकी ड्यू डिलिजेंस भी हो रही है, इज दिस गोइंग टू बी टेलीवाइज्ड या दिस इज ऑफ कैमरा? This Will be will be short. televised. It will be It short, will and be it will short. be, yeah, it will be. Okay, Salman bhai, another very interesting question is about the money route. हमें पता है कि ARY का digital footprint पूरी दुनिया में है. You have viewers around the world and they're overseas Pakistanis and very talented people around the world. हमारे पास एक सवाल आया है, somebody who says that he's based out of UK and Europe. They're offering on-demand IT support through a network of 20,000 freelance engineers. Operations और coordination team उनकी पाकिस्तान में है, लेकिन कंपनी उनकी यूके में रजिस्टर हुई हुई है. ऐसे केसेस के लिए what do you have in mind? Does it have to be an indigenous, all organic, completely Pakistani No, organization? no, no, no. It has to be. See, the show will be shot in Dubai, in Pakistan. Tina, Okay. that's your initial groundwork. Park launch. So the conversation we were having a bit further is like
हमने 5 साल क्यों लगाए या भाई ने 5 साल इसलिए लगाए बिकॉज वी वर लुकिंग फॉर a partner, a stable and a partner which has a larger network. So Park Launch is one of the best group of people which has the best network around the world. Ali is based in California. A lot of people who are based in Dubai, London, Pakistan is based all over the world. तो पार्क लॉन्च ने क्या किया, पार्क लॉन्च ने सबको एक साथ प्लेटफॉर्म पे लेके खड़ा कर दिया। वहां से वो सीरीज बी की इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, स्टार्टअप्स की इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। सो दे हैव डन ऑल दिस पार्ट। तो हमने कहा पार्क लॉन्च द बेस्ट प्लेयर्स इन द मार्केट टू ब्रिंग देम, to bring us together. So ARY showcasing the program, not only showcasing the program, investing in the program. जैसे मुझे अली ने कहा कि सलमान भाई आप एक शाख बन जाए, आप एक गुरु बन जाए, ठीक है ना। तो मैं कहा यार मुझे टीवी पे नहीं आना, बट आई डोंट वांट टू लीव दोस आइडियाज। अगर फॉर एग्जांपल किसी गुरु को आइडिया पसंद नहीं आई, सॉरी, किसी गुरु को आइडिया पसंद नहीं आई, तो आई वांट टू बी अ पार्ट, मुझे आइडिया पसंद आ जाए, having that thought process. So that's why we kept a fund. The third thing you asked was the पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उसके लिए हमने क्या किया, we have only taken those gurus who have been vetted, they are big names, and they are putting the seed capital before we go out in the market distributing money. जितने भी जो क्वेश्चंस हैं गुरुज के और हमारे एंटरप्रेन्योर्स के, पिचर्स के पैसे मिलेंगे, हाँ मिलेंगे, क्योंकि पैसे हमारे पास पहले पड़े होंगे, हम उस पैसों को पहले सेव गार्ड करेंगे। द मोमेंट अ गुरु ऑन द स्क्रीन सेज यस, आई एम इन्वेस्टिंग एक्स अमाउंट ऑफ परसेंटेज, एक्स अमाउंट ऑफ मनी, देन Park Launch and ARY will be responsible for that investment. Then the guru cannot, you know, बटल आउट किसके, मैं नहीं कर रहा कि ये था, क्योंकि वो पहले से मेंटोर जो है ना, वो उसको पैसे वेट करके उसको दे चुका होगा। लास्ट थिंग व्हिच यू आस्क्ड के सॉरी व्हाट वाज द क्वेश्चन यू आस्क्ड सलमान भाई, अगर लास्ट। कंपनीज 100% पाकिस्तान में रजिस्टर्ड एंड पाकिस्तान से ऑपरेशन करना चाहिए? Could be anywhere in the world. Could be anywhere in the world. Could be, but the program will be done in Pakistan, the first season. We have plans to move this program around the world. So we want to move this program, our second season to be in Dubai, the third season to be in the UK, the fourth season to be in America, and scale those events. And we are right now inviting Pakistanis, all Pakistanis from anywhere in the world, which has some kind of a back end support in Pakistan. Like you said, 20 engineers हैं, उसका back end support कहाँ है? पाकिस्तान में है ना, ठीक है ना। So we are actually directly or indirectly helping the Pakistan. See, our job, what is the concept of bazaar? Bazaar ये है कि we want the world to find out through our network, through Park Launches network, कि we as Pakistanis have great ideas. Okay? Once we open the ideas to the world, and once local investors come and invest it, and if the product is scalable, if the startup is scalable, if the companies are scalable, the world will come in. These big fund managers will come in and say, you know what, we want to be a part of this company. We want to be part of this company. And so Right. that's the whole idea. We want to showcase our talent through Park Launch and ARY's platform of Bazaar around the world. Because investors जितने भी हैं, especially for the startups, वो सारे mature investors बाहर हैं, ठीक है ना। हमारे पास में इतने बहुत कम इन्वेस्टर्स हैं, या बहुत कम फंड मैनेजर्स हैं जो उसको समझते हैं बात को, बट बाहर बहुत ज्यादा है। सो वी नीड टू अट्रैक्ट दोज इन्वेस्टर्स आल्सो टू कम एंड पार्टिसिपेट इन आवर in our program, in our community, in our Absolutely. country, in And our just building enterprise. upon that thought, before the federal budget of Pakistan 2025-2026 came out, हमने OICCI की और बहुत सारी different reports देखी थी जिसमें उन्होंने कहा कि the business confidence has actually gone up by 16 points. It was somewhere at -5 और वो 11 तक shoot up किया था. Ali, I also want to, because building upon Salman Bhai's idea that you should have a base in Pakistan, but it could be a company or an organization based anywhere, registered anywhere around the world.
What's the policy ecosystem like for that? I mean, is it going to be supportive? Because number one, आप उनको mentor कर रहे हो, ठीक है, वो अपनी publicity के लिए, आपके program के लिए, आपकी recording के लिए, they come to Pakistan. But once you have committed money to them and they're registered, say, in Canada or in Dubai or in UK, how will the money move to them? And will the ecosystem, the policy framework support it? या तो हम दोनों के जो फंड्स हैं, मतलब वन इज पार्क लॉन्च एंड ARY, we जी are registering it in the US. It will be a US registered fund. अगर उन्हें पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है, a lot of the companies have holdco, opco models. अगर हमने पाकिस्तान में भी ट्रांसफर करना है, we have companies registered both from ARY and Park Launch in Pakistan as well. So we'll use that as a vehicle. The same thing is for the gurus. So just to give you profile of our gurus, some of the people we have spoken with, I know Salman Bhai and JJ might not like it, and I would not share the name, but some just to make sure that people at least know, is one of the gentlemen that we are speaking with is probably one of the largest family office in GCC today. The second one is a Pakistani American. His startup was valued at $9 billion, right? There are over 20 Pakistani unicorn founders globally. So Pakistanis, when they go abroad, they're doing phenomenally well. Like Salman Bhai Yeah. said, we are just connecting them back. So our challenge in finding gurus who will put money in escrow, I think our challenge would be the other way around. Who are the top 5, 6 folks who can actually help, the startups on the show to bring them on board. So that's what बिल्कुल सही. we are working with. I think Ali, in how will terms you of make sure that it's inclusive? Because आमतौर पे होता ये है कि लोग कहते हैं कि जी एक क्लब है, big boys club. If you speak well, if you know the right people, you'll get the eyeballs, you'll be impressive. आपको सही वो लिंगो बोलनी आती है. Yes, you're putting in an equalizing factor कि आप जब उनको mentor करोगे तो उनकी grooming already हो जाएगी. लेकिन आप कैसे इंश्योर करेंगे कि पाकिस्तान के सेकंड टियर थर्ड टियर शहरों से भी कोई लाला मूसा में किसी के पास एक जबरदस्त आइडिया है और वो भी उतना ही इंक्लाइंड फील करे एंड दे हैव अ लेवल प्लेइंग फील्ड. I think कि हम लोग, we are slightly more seasoned. I think that's what I think the trick about this show is, right? One is to really identify, good founders wherever they come from. To give you an idea, there's a gentleman, Qasr Yunus, Wulala Musa ki पैदाइश है, सही है. His company Applied Intuition just recently raised money in the US at $15 billion valuation. So Pakistanis, even from small towns, can think big and do phenomenally well. जी Our goal is to back the best ideas, and I think that's the job of our group and the committee on where these folks come from. Language क्या बोलते हैं is not important to us. In all honesty, I think the show mostly will be English Urdu का कोई mixture ही super होगा, super. just like any I other have show. a Ji, Ali, I have a lot of questions coming in. I'm going to try and keep this fast moving. JJ, this one's for जी you. Usually impression लोगों का ये होता है कि पाकिस्तानी startups, even when they're able to raise funds, वो एक साल में क्रैश एंड बर्न करती हैं. एंड यस, सिलिकॉन वैली में देख लें, पूरी दुनिया में देख लें, रेशोज यही हैं कि बहुत सारे स्टार्टअप्स फेल करेंगे. लेकिन दैट्स अनफॉर्चुनेटली द जिंक्स दैट पाकिस्तानी स्टार्टअप्स आर कैरिंग. यू प्रोबेबली लुकिंग फॉर द नेक्स्ट यूनिकॉर्न. क्या करेंगे टू मेक श्योर दैट दे डोंट क्रैश एंड बर्न? ओके, देखिए, कपल ऑफ इयर्स बैक आई वाज इन हार्वर्ड, उन्होंने हमें एक चीज सिखाई थी कि जो स्टार्टअप का बिजनेस है उसमें 99% ऑफ स्टार्टअप्स फ्लॉप एंड ओनली 1% दे सक्सीड. सो आप अगर ये सोच रहे हैं कि सारे स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल. सो आर एफर्ट इज कि हम जो स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं वो ये है कि पहले बिफोर दे कम एंड पिच दे आर ट्रेन्ड, दे आर ग्रूम्ड, सो दैट दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, दे नो व्हाट दे आर आस्किंग फॉर. बट हम उनको वहां पे नहीं छोड़ेंगे. हम उसके बाद वी विल स्टार्ट प्रमोटिंग देम, बिकॉज गुरुज जो होंगे हमारे, उनके पास उनकी दो जॉब्स हैं. एक तो है इन्वेस्ट करना विद हार्ड कैश, दैट्स वन. बट सेकंड है उनको एलिवेट करना, उनको लेके जाना. बिकॉज जो हमारे गुरुज होंगे उनके सिर्फ ये नहीं है कि उनके पैसे लगा दिए और भूल गए, उसके बाद उनको लेके जाना है. एंड देन वी आर गेटिंग डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स ऑन बोर्ड, वी आर गेटिंग ग्रोथ एडवाइजर्स ऑन बोर्ड, लाइक सलमान भाई ने रेफर किया मोहम्मद साकिब, जिनका काम ये है कि उनको राइट जगहों पे लेके जाना, उनको राइट एजुकेशन उसके बाद देना. बिकॉज वो तो आपकी इनिशियल फंडिंग आ गई, सीड मनी आ गई आपके पास, बट उसके बाद द जर्नी इज वेरी लॉन्ग, एंड उस जर्नी के लिए आपको प्रिपेयर करना है.
because now you have a startup ready, you have initial investment, but you have to go to Series A and so on. तो उसके लिए भी आपको prepare करना है. So we will not because we want case studies, we want stories that we can establish, and next year जब हमारे यहाँ 2-3 साल बाद ये सीजन चल रहा हो तो हम बोल सकें कि जी फला स्टार्टअप जो था आज यूनिकॉर्न बन चुका है globally and we were part of it. So we want to be part of the journey. We don't want to be जी. part, because that's the difference between Bazaar and Radhush. We are not going to be just a show. We are going to be a part of the journey from zero to a unicorn. Okay, very important question because you're the media man and you have to your credit many formats and programs जो व्यूअर को ग्लू करके रखती है. मुझे बताएं व्हाट्स इन इट फॉर द व्यूअर. हम तो एमबीए की क्लास में देखते हैं पूरी साल अगर पढ़ाई की होती है, प्रेजेंटेशन में लोग चेकआउट हो रहे होते हैं. व्यूअर ये क्यों देखेगा एंड व्हाट इज द लर्निंग ओवर देयर जब ये एक फॉर्मेट इस तरह का चल चुका है. यू वर्कड ऑन 5 years. व्हाट्स इन इट फॉर मी एज अ व्यूअर? Okay, पहली बात तो अगर ये एयरवाई पे चीज आ रही है तो इसके अंदर अपने गिमिक्स होंगी, चीजें होंगी जो अपने नॉर्मल यूएस को लाए. बट द गुड थिंग इज दैट इन लास्ट couple of years एयरवाई हैज सक्सेसफुली penetrated into the generation Gen Z and the new generation, and now they are watching our content a lot. So the Okay. one of the reasons of why we are entering into this format is that we will be targeting to that segment as well. So वो भी होगा. और इसमें अगर आप देखें ना, आपने इंक्लूसिविटी की बात की थी कि तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ होम ग्रोन बिजनेस. आजकल हर घर से देखें कोई बिजनेस चल रहा है, औरतें कुकिंग बिजनेस कर रही हैं, डिफरेंट चीजें. सो वी वांट टू इनकरेज दैट एज वेल, बिकॉज अब सिर्फ एक आदमी का घर में जॉब करना या एक आदमी का बिजनेस चलाना इट्स नॉट इनफ. अब हर घर से बच्चे जो आ रहे हैं, जो पढ़ के आ रहे हैं, अब हर बंदा कहता है मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है. सो एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है, तो उन सबका ही इंटरेस्ट है. सो दिस शो विल बी केटरिंग टू ऑल दोज बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, जो बच्चे हों, चाहे वो हाउसवाइफ्स हों, चाहे वो एस्टेब्लिश स्टार्टअप्स हों. उन सब के लिए ये है कि देयर विल बी समथिंग इंटरेस्टिंग ऑन दैट. और फॉर्मेट की जहां तक बात रही, तो रेस्ट assured that we will have our gimmicks and we will have a lot of glamour happening in the show, so that it's not boring. We are certainly looking forward to that. Salman bhai, are you with us? Because the next question is जी 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 directed to you. Salman आई bhai, एम मुझे हियर. बताएं कि generally it is believed about Pakistani businesses, even the big ones, कि हमारा risk appetite और हमारा growth appetite कहीं ना कहीं comfort zone में चला जाता है. People are happy being Karachi's number one, Lahore's number one, Pakistan's number one. वो जो appetite है ना कि हम scale up करके दुनिया पे छा जाएं, वो unfortunately missing है. How will this show, this format, tease people into thinking big? Salman bhai, are you with us? This one's for you. हेलो. Hello, can you hear me? Hello. I think Yeah, it's your voice is breaking up. I don't know if it's from my Sorry, side I'm or it's cracking up from. probably. Salman bhai, am Hello. I audible to you now? Am I audible? I think we're having a little bit Yeah, of a you glitch. audible now? Ali? The screens are frozen. Yeah, I can hear you. जी. Salman bhai, my question was कि हमारे यहाँ Hello. usually Pakistani businesses and startups have a comfort zone. How will you actually enhance their risk appetite to think big, to go global, to think about, getting out of their comfort zone? I think Sunam Ali, bhai is having a tech issue. Yeah, जी जी. Sudha, can you hear me? Or Ji, you want me to Salman log bhai, out we and can log in hear you again? well. I'm going to type and send this question across to you. But Ali, in the meanwhile, do you want to segue and maybe comment on that, on the appetite, risk appetite and growth appetite? Yeah, I think one of the things that I have noticed coming from San Francisco is Pakistan ke andar, like you rightly said, right? People like think small, or I think the goals are okay, we have done like 10, $20 million, and that's also on the high end, but we are doing Hmm. really, really well. And I think in Ji. the West, people think really big. I think it comes from, the coaching. I think it can be taught. And it also Hmm. is finding the right entrepreneur, nourishing them. Because, like I said, there are over 20 plus Pakistani unicorn founders, right? Okay. Globally. Why in Pakistan they are not there, right? We have to ask the question. I think it has to do just providing the right, um, ecosystem around it.
or the mentors around it, the advisors around it. So that's what we're trying to do. We're trying to connect them with folks who will encourage them, inspire them. We'll connect them. Like we have folks who are growth hackers, growth advisors, जी, so like Moment and stuff. So we will expose them to those bigger ideas, bigger markets, where they get inspired and they want to work on those. And if someone, okay, we're not looking for small ideas, frankly speaking. We want to okay, bring in the ideas that can scale and that can, hopefully go big. And those are the people we want to back. Those are the people we want to absolutely. train. And maybe they are critical for you. We already have like thousands of people applying, but we will probably bring in a very, very small subset, right? So Hmm. that's what we are looking for. We're looking for अच्छा someone एक who's dreaming जी big. एक और चीज जो Sidra, लोगों के जहन में आ रही है Sidra, जी you want me to answer that question you just asked? यस प्लीज यस प्लीज देखिए ना, बात ये है कि जो हमारे पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स थे एक जमाने में, जी वो they were very shy to come on TV. They were very shy to show themselves who they are. ठीक है ना? That's why you didn't see. So there's an American style of management and there's a British style of management. British CEOs कहते क्या है? They always stay at the back. The American style of management is the CEO is always promoting the company himself. So American में आप जितनी भी आप companies देखेंगे, so you will see the CEO up on stage promoting and talking about his product as if he has, like it's his own product. Even in some commercials, you will see the CEO coming out in a commercial trying to sell his own product. So that means you put your money where your mouth is, right? So so you are sure about that product. You're sure about that. So this is now has changed in Pakistan. Now you see a lot of CEOs of Pakistan. मुझे याद है, when you used to work with, you used to be a part of ARY. When I used to come on TV, I tried to promote my own brand. लोग मुझे कहते थे, यार ये क्या कर रहा है? ये अपने ब्रांड को क्यों प्रमोट कर रहा है? समझ ना? ही शुड बी क्वाइट. ये मेमन इंसान है, इसको खामोशी पीछे होना चाहिए, इसको काम करना चाहिए, धंधा धंधा करना चाहिए. ये अपना प्रोडक्ट क्यों प्रमोट कर रहा है? The reason why I promoted my product was because I wanted the world to know who is behind this product, which family is behind this product, and the world. I go to ARY and so many other TV stations. Now we are one of the biggest content providers in this world. So we took the company in 25 years to a different level. This is what we want to know. This is what we want to find out. So if the entrepreneur is shy, he does not want to scale, he is not part of, he should not be involved in bazaar. He should not even pitch his idea. ठीक है ना? अगर इसको सिर्फ कराची तक या लाहौर तक रखना है अपना बिजनेस को, then he should not pitch. If he has the dreams and the aspiration to become a global entrepreneur, to have a seat on the table, then he should be a part of bazaar. Then he should at least apply for bazaar. This is very clear. हम ये नहीं कह रहे कि हम गांव से या छोटे जो उर्दू जिसको उर्दू नहीं आती, इसको अंग्रेजी नहीं आती, हम उसको नहीं ले रहे, हम सबको लेंगे. बट हिज ड्रीम शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि आई वांट टू प्रमोट माय कंपनी एंड आई वांट टू प्रमोट पाकिस्तान around the world. We एब्सोल्युटली should be in a couple of years, whatever startups we, bring on the table or to the world should know that it is made in Pakistan. ये चीज पाकिस्तान से बाहर निकली है और आज दुनिया के अंदर यहाँ पहुंच गया है. And JJ, Ali, Park Launch, the team of Park Launch will be all a part of it. And it's the most, बहुत ही खुशी होती है अंदर से जब आप किसी पाकिस्तानी कंपनी को ग्रो करते हुए देखते हैं. ठीक है ना? एब्सोल्युटली And you are a part of showcasing that growth around the world. A startup, जब American companies आई थी पाकिस्तान startups के अंदर invest करने के लिए, we felt very good. I know a friend of mine whose son sold a company in India from the UK. And the 21-year-old boy made so much money. The money is not the problem, but मैं उसका नाम, उसके बाप का नाम हर जगह लेता हूँ, बार बार लेता हूँ. आप बिल्कुल It's a सही कह रहे हैं very और हम इमोशनल भी है ना एज पाकिस्तानीज वे वेरी इमोशनल अबाउट आवर ब्रांड्स अबाउट द प्रोडक्ट्स आपका रोल यहाँ पे इज जस्ट नॉट स्केल शोकेसिंग देम एंड स्केलिंग देम यू बेसिकली बीइंग द कैटलिस्ट दैट इज गोइंग टू गेट देम अ लॉट ऑफ थिंग्स बट जे आई हैव अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन
क्योंकि ये फॉर्मेट आपने तो इसको ट्विस्ट दिया है एंड you've worked really hard at it for the last 5 years, but there will be several networks perhaps doing similar formats. तो एक सवाल आया है कि जो भी आपके पास अप्लाई करे एज एज अ बिजनेस इस मेंटोरिंग प्रोग्राम के लिए एंड टू बी showcased as a business idea, do they need to be exclusive with Bazaar at ARY? And can they be competing in other programs or other platforms? अच्छा, फॉर्मेट एक अलग चीज होती है और बिजनेस एक अलग चीज है. सो ऑब्वियसली दिस इज वन फेज ऑफ देयर बिजनेस. अगर आज वो सक्सेसफुली यहाँ से इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर लेते हैं, तो उसके बाद वो जी. दे विल बी गोइंग इन डिफरेंट. अगर उनको उसके बाद किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत पड़ती है या उनको किसी और जगह जाने की पड़ती है, तो आई थिंक एज चैनल हम लोग उसको किसी को स्टॉप नहीं कर सकते फ्रॉम हाउ दे डू बिजनेस. बट इंशाल्लाह इफ दे आर गुड एंड दे सक्सीड, बाजार के बाद उनको शायद जरूरत ना पड़े. हम्म. तो नहीं, आप अभी आपने कोई. but जी. Sidra said, जी. to answer your question, once a guy is in, once a company or person is enrolled in Bazaar, there will be exclusivity. Of ऐसा नहीं course. कर सकता वो कि हम उसको मेंटोर करें 2 महीने के लिए और वो जाके 36 टीवी स्टेशन पे जाके पिच कर रहा हो हमारी मेंटोरशिप को. ठीक है. हम्म. So that is something which is, of course there is a clause, a हम्म. competition clause involved in it. And of course, if we do not believe on his product, then he's free to go wherever he wants to go. और हम्म. जो एक और आपने सवाल पूछा था ना about the viewers की views के लिए क्या है. जी. We have, I don't know if Ali and JJ would like me to say that. मैं काफी देर से कोशिश कर रहा हूँ उन दोनों को कन्विंस करने के लिए. It's going to take time. It might not happen this season, but it might happen next season. That we want the viewers to also get involved in investing in that product. हम्म. For example, 4-5 groups बैठे हुए हैं, एक किसी ने pitch किया, and he wants, say, let's say $2 million, but the group says my appetite is for $1 million. So you got $1 million. So we want to open it up to the viewers, crowdfunding, blockchain के थ्रू कि हम्म. आओ अपने $10, $20, $50, $100 लगाएं. If you trust this company, and we have our own seed capital, जहाँ आप invest कर सकते हैं. So the viewers, uh, you know, one viewer will be who will, of course, knowing JJ style, उसको मसाला तो होगा. एक वो होगा जो मसाला देख रहा होगा. एक व्यूअर सही. वो होगा जो सीख रहा होगा. ठीक है ना. हम्म. एक व्यूअर वो होगा जो खुद शायद इन्वेस्टर बनना चाहता है. ठीक है ना. इसने खुद इन्वेस्ट करना चाहता है. एक व्यूअर वो होगा जिसको खुद आना है इस प्रोग्राम पे. सो देयर बी डिफरेंट canvas of people who would want to come and watch this. Okay, let me give you an example of Tamasha. हम्म. ठीक है ना. Tamasha is a program which is Big Brother. ठीक है ना. Yes. हमने तमाशा को ऐसे ट्विस्ट किया कि जो बिग ब्रदर है, दे स्टार्टेड टेकिंग आवर फॉर्मेट. उन्होंने हमें कहा कि यार एक काम करते हैं, जो आप लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छा हमें लग रहा है. इट्स अ न्यू आइडिया. कैन वी यूज योर आइडिया इन आवर फॉर्मेट्स? इट्स अ शो. हम्म. व्हाई नॉट? you know so inshallah, we have a good team, and knowing JJ's masalas, so we'll have enough masala in the pot. It will taste That very is nice. that is music to my ears, and we are already getting very excited. Once again, हमें जो लोग देख रहे हैं उनके लिए timeline हम बता दें कि 1st of August is the extended deadline for applying, and once you have made your pitch and you make it through the cut, you're going to be part of the mentoring programs, जहाँ पे आपको initially आपके mentors, आपके gurus आपको train करेंगे, आपकी pitch को मजीद groom करेंगे, और इसी दौरान due diligence भी होगी, so that not just you are camera ready, but you're also business ready when you're going to go into this format. Ali, there's another very interesting question, probably a few of them. I don't know how much time we have, so Hafsa will have to guide me कि हम कितने और सवाल ले सकते हैं. एक सवाल आया है कि what if there is a creator studio, creator focused tech platforms अगर हों. A lot of people are trying to do that. They are picking up either influencers, traders, people with a product, and they are coming up with a certain create a studio where people can come and showcase it. क्या इस तरह के आइडिया को भी लाया जा सकता है? नंबर वन. नंबर टू, इसका प्रैक्टिकली इस वक्त इन ऑपरेशंस होना जरूरी है किसी भी आइडिया के लिए बिफोर दे कैन मेक इट टू द कट? जी अली. No, I think it's a great idea. I think, but it always has to be backed by, sound business plan, right? And the team behind it.
So I think if you have ideas, like I think Salman Bhai शुरू में कह रहे थे, the ideas are dime a dozen, right? I think at some point the rocket internet was just taking ideas from one market and deploying them in other markets, and they made billions and billions of dollars doing it. So I think the idea is really good. I think creative market will be huge. So if somebody can pull it off, I think why not? I think the idea, whether it's on the piece of paper or written, I think आजकल की market में from the investor side, I think you get more traction if you have some market adoption, you have some initial clients. Now it doesn't mean you can't just bring in an idea, but it's a barrier to overcome, right? So with the right time, with the right team, right? If somebody comes in who started Daraz and talks about some idea that we feel like this team can execute, and they have sound business plan behind it, and it could be just in a very ideation phase, but again, at ideation phase you have a lot more barriers. I think if you have, at the end of the day, if you have market adoption, if someone has paid for your product, there's nothing like it, right? So, and that's happening globally. So, Sidra, I think if they can apply without any Yes. customer traction and ideation, but again, then now you have to work double hard, right? Or you have to be really, really good and stand out. Absolutely. One of the best jokes I've ever heard and I've come across, and this is a real life experience. I was actually mentoring a few ideas and startups at the National Incubation Center. तो वहाँ जब उनकी पिच तैयार हो रही थी जेजे, तो किसी ने कहा कि यार one of the people we were talking to came from a very affluent background. यानी अगर वो सिर्फ अपने ड्राइंग रूम में देखे तो the kind of money he was trying to raise वो चंप चेंज था उसके अपने रिश्तेदारों के लिए ही। तो हमने सारों ने उससे पूछा कि यार तुम यू कैन आस्क योर रिलेटिव्स फॉर मनी एंड यू कैन बूटस्ट्रैप एंड यू कैन डू दिस आइडिया योरसेल्फ। तो उसने जवाब में कहा कि रिश्तेदारों से पैसे लूंगा तो वापस करने पड़ेंगे। So there is a certain way of actually looking at raising funds as well. लोगों को लगता है फ्री फंड है, इसको क्रैश एंड बर्न किया जा सकता है, उसके बाद मेहनत करनी जरूरी नहीं है, जिम्मेदारी जरूरी नहीं है। हाउ विल वी थ्रू द मेंटोरिंग प्रोग्राम ब्रिंग इन वैल्यू बेस्ड लीडरशिप कि आपकी एथिक्स भी सही हो, यू नो दैट दिस मनी इज गोइंग टू फ्यूल योर एम्बिशन बट देन यू स्टे एम्बिशियस। हाउ विल यू इंश्योर दैट? सिद्रा, जो uh, आपको पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो मेंटरशिप का प्रोसेस है, दैट्स गोना जी। स्क्रूटनाइज अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स। हम्म। आपकी जो ड्यू डिलिजेंस में चीजें बाद में होती हैं, जी। उनकी बिजनेस प्लान, उनके सेल फिगर्स, उनकी लीगल स्टैंडिंग, उनके हम्म। एथिकल इश्यूज, वो सब वहाँ पे क्रॉस चेक हो रहेंगे। बिकॉज आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द क्वेश्चन एज वेल, लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग कि मेंटोरशिप कैसे होगी। मेंटोरशिप बेसिकली, वी हैव मेंटोर्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान एंड इवन आउटसाइड पाकिस्तान। सो जहाँ जो कन्वीनियंट होगा, जिसकी रेलिवेंट फील्ड होगी, वो मेंटोर असाइन होगा टू दैट स्टार्टअप। एंड नॉट नेसेसरी जो अभी हम शॉर्टलिस्ट करेंगे स्टार्टअप्स को, वो फाइनल एपिसोड के अंदर हों या फाइनल राउंड में जाएं। बिकॉज उससे पहले मेंटोर्स कैन डिसाइड कि ओके, द आइडिया वाज गुड, इनिशियल स्क्रूटनी में वो निकल आए, बट देयर इज सम प्रॉब्लम्स विद देम। सो अनलेस वो प्रॉब्लम्स रेक्टिफाई नहीं होती, उनको हम गुरु से सामने नहीं लाएंगे। सो मे बी दे कैन गो बैक, वर्क ऑन इट एंड कम बैक नेक्स्ट ईयर। सो जो आपका पॉइंट है वो बड़ा वैलिड है कि जी पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है, पैसे के बाद उसको करना है। तो वो सारी चीजें मेंटोरशिप में, जब वो मेंटोर प्रोसेस गुजर रहा होगा, तो पाक लॉन्च और एआरवाई की टीम उसको साथ स्क्रूटनी कर रही होंगी कि वाकई में ये पैसे मांग रहे हैं जो वो वाकई पैसे हैं या यूज होंगे, और सही होंगे या नहीं होंगे। तो हाँ, ऐसा पता नहीं चला वो लेके जाना हमने केस पैसे ले स्टडी लिए, उसके के। बाद बड़ा बंगला आ गया, एक ऑडी गाड़ी खरीद ली, और पता चला कि बिजनेस साइड पे हो गया। सलमान भाई, वैल्यू बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप इज गोइंग टू बी द वे फॉरवर्ड। आई वाज जस्ट थिंकिंग आउट लाउड, जब हम स्केलेबिलिटी की बात कर रहे हैं, कई लोगों के जहन में सिर्फ ये आता है कि यार मेरा आइडिया इस कंफर्ट जोन में बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है, आई हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड इट एंड सी आई हैव ऑल द प्रूफ के इट हैज पोटेंशियल। और उनको लगता है कि उस पोटेंशियल से रोकने के लिए सिर्फ जो चीज उनको रोक रही है वो फंडिंग है। तो वो आंखें बंद करके सिर्फ फंडिंग को रेस करने की बात कर रहे होते हैं। अक्सर जब फंडिंग मिल जाती है, उसके बाद आपका सिस्टम हीट अप हो जाता है बिकॉज यू आर नॉट रेडी फॉर स्केलेबिलिटी। आई नो दिस इज गोइंग टू कम अप इन द ड्यू डिलिजेंस एंड द मेंटोरिंग पार्ट ऑफ इट, लेकिन व्हाट वुड यू लाइक टू टेल आवर व्यूअर्स जो इस वक्त देख रहे हैं कि दे शुड, द बक डजंट स्टॉप ओनली एट द फंड्स, it is about ideas, it is about systems, it is about making sure that you have it in you to scale up your business.
See, Sidra, there are two things in a company. जी One is the idea in the company, and one is the person behind the idea in the company. Those two things are the most important things that we as entrepreneurs and we as people who do business with other people see. Sometimes you have heard this saying, "I don't work the company; I work with the person behind the company," right? And sometimes people say, "I work with the product, not with the people." So you need to have both. सो जितने हमारे मेंटोर्स हैं जितने हमारे गुरुज हैं एंड द टीम behind the mentors and the gurus like me, Ali and JJ and Taimur and Ali Tareen, all those guys, we have been in this market for a very long time. Everybody has, ARY has over 15,000 people working in different genres. Television में 5,000 लोग काम कर रहे हैं, हमारी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, गोल्ड में काम कर रहे हैं, and Ali has over you know 1,000 people, entrepreneurs on his platform. So he knows, we are good judge of people. So when the applications are coming, we know the idea, we know how scalable the idea is, how scalable the idea is not. That's one part. उसके बाद जब हम मेंटोरिंग कर रहे होंगे ना, तो हमें उस इंसान जो आइडिया के पीछे बैठा हुआ है उसका भी एक आइडिया हो जाएगा कि विल दिस पर्सन बी एबल टू टेक दिस प्रोडक्ट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना, कि वो पैसे लेकर कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पैसे मिल गया, बस मैं जो है ना मेरा पहला काम हो गया. और अक्सर लोग, स्पेशली हमारे यहाँ, पैसे जब मिलते हैं ना तो वो बिल्कुल जो 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 बॉइलिंग पॉट होता है ना वो ठंडा हो जाता है. चाय बनती है, चाय चाय जब गर्म हो रही होती है, इसमें जब दूध डालते हैं ठंडा, तो वो अचानक से जो है ना, और दूध इज द मोस्ट द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ अ चाय. ठीक है ना, वो बिल्कुल चाय ठंडी हो जाती है, फिर उसको वापस बॉईल करना पड़ता है हमको, ठीक है, चाय को पकाने के लिए, चाय अच्छी बनने के लिए. तो वो जितने भी स्टेप्स है ना, वी हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दो स्टेप्स. कि हम पैसे देने के बाद, दूध डालने के बाद वो चाय ठंडी ना हो, स्टोव बिल्कुल गर्म रहे, चाय बनती रहे, और और लोग चाय उस चाय के साथ एंजॉय करते रहे. सो दिस इज लेकिन समथिंग सलमान भाई दैट. अगर चाय बहुत ज्यादा खौल गई, कई दफा ये भी होता है ना कि दो दोस्त आए थे बड़ा जबरदस्त बिजनेस आइडिया लेकर, उन्होंने आपको भी इम्प्रेस किया, बिजनेस भी अच्छा चला रहे हैं, पैसे भी मिल गए, फिर उनकी आपस में ही लड़ाई हो गई, तो ऐसे चीजों को दिस फिर इज कैसे रिजॉल्व दिस करेंगे? इज दिस इज बिजनेस ना. देखे ना, चाय, खोलती हुई चाय को दो तरीके से रोक सकते हैं. या तो उस बर्तन को चूल्हे से हटा दें, यस ठीक है ना, या तो उसके ऊपर, टिकटॉक पे चल रहा है आजकल, उसके ऊपर एक वुडन स्टिक रख दें, जी ठीक है ना. तो हर चीज की सोल्यूशन है. you know बिल्कुल once we scale the company, once the company is doing very well, of course, if the company is, partners don't want to stick together, we हम्म can't do anything about that. ठीक है ना. Of course, you have seen many companies, वो बहुत दूर के स्टेज है, जी और हम चाहते हैं वो स्टेज आए. वो स्टेज कब इंशाल्लाह आता है? जब पैसे बहुत बन रहे होते हैं. हम्म, ठीक है ना. बिल्कुल तो हाँ, तो हम चाहते हैं कि वो स्टेज आए जहां पार्टनर्स लड़े आपस में कि यार ये आइडिया मेरा था. अगर हम उस स्टेज पे पहुंच गए, सो दैट मीन्स हमारा जो बाजार है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वो हिट हो गया, वो सुपर्ब हो गया. क्या ठीक बात है है, जबरदस्त। अली एक और बड़ा इधर इंटरेस्टिंग सारे सवाल आया सारे है। काम हम सारे जी काम हमने नहीं करने कि उनको हम फिर उनकी दोस्तियां भी कराएं, उनकी सुलह जेजे भी कराएं. जेजे ने फौरन सारे कहा हम काम नहीं उनको करने. गोद नहीं ले रहे हैं हाँ, हम गोद नहीं ले उनको रहे सिर्फ उनको. बाजार में लेके आ रहे हैं और उनको पैसे दे रहे हैं, उनको ग्रूम कर रहे हैं, गोद नहीं ले रहे हैं। अच्छा अली, बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस कंपेयर नहीं किए जा सकते, सो पीपल आर आस्किंग, आर दे एनी फेवरेट वर्टिकल्स एंड इंडस्ट्रीज दैट यू आर स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन, सच एज हेल्थ केयर, सच एज रिटेल और मे बी एग्रीकल्चर? और अगर आपको एक आइडिया एग्रीकल्चर का बड़ा जबरदस्त नजर आता है और उसके साथ साथ हेल्थ केयर रिलेटेड आइडियाज हैं वो बहुत जबरदस्त हैं, इज द फंड competitive? लाइक इज देयर गोइंग टू बी एन अपर लिमिट कि जी मैं टॉप टू आइडियाज में मुझे बस इन्वेस्ट करना है? एंड देन इफ दैट इज द केस, देन हाउ विल बी एक्चुअली कंपेयर टू बिजनेस आइडियाज which are from very different or competing industries? I don't think we have to compare them, right? They're different sectors. Like all of us, like we have done investments. Or I know JJ does. Salman Bhai has probably the widest portfolio. And through Park Mhm. Launch also, we have our own rolling fund before, and I've done investments before even starting Park जी Launch. I think what we so it doesn't have to be competing one sector or another. I think जी it depends on how scalable that idea is, Sidra. So you can be an agri-tech and could be a much bigger idea using drone technology or something that can translate into defense tech and
in multiple different areas versus you can be in health tech and the idea is much more limited, right? So I think it depends on the idea itself, how scalable it is. Our biases, like what Salman Bhai and I think JJ has been saying it, we're looking for people who are thinking big. We are not looking for ideas कि जो we want to just limit it to one city and stuff. We want to back entrepreneurs who want to go global. I think with Bazaar, what we are offering is we want to connect you with some of the very best mentors and hopefully take you global. I think after this, you would not have to come to any other platform. And secondly, we're starting with Pakistan, but any Pakistani, even abroad, I think if you have connections back to Pakistan, we would encourage you to apply. Our longer term goal is, like what Salman Bhai said, there are two different things. One is we want to engage diaspora back to Pakistan. Pakistanis are doing phenomenally well, right? Like Saudi mein 2 million baithe hain, UAE, UK and elsewhere. We want to connect them back to Pakistan. There's top talent sitting everywhere. Secondly, we want to see how they will engage back. Now, to share more details, we did a lot of work in around crowdfunding and tokenization. So I can't share more, except that would be maybe in the future seasons. So we have a lot to look forward to, Yes. but we want to make it franchise and we want to take it back. That's the goal. वेरी ट्रू। एक अगला सवाल आया है जिसको सुन के ना मुझे वो K3G की अंजलि याद आ रही है, जिसने कहा था ये शायद मेरी मिठाई की दुकान हड़पना चाहता है। सवाल ये है कि हाउ विल बाजार एंड पार्क लॉन्च एंड ARY मेक श्योर कि जो फाउंडर्स हैं या बिजनेस आइडिया ओनर्स हैं उनको इन्वेस्टर्स और पार्टनरशिप्स एक्सप्लॉइट ना करें। I, So I can very much sense the palpable trust deficit over here. Salman Bhai and JJ, what would your take be? This is a very Pakistani way of looking at it. लोग अपने can I add आइडिया one thing, शेयर करने Sidra? से भी डर रहे होते हैं। उनको लगता है कि मेरा आइडिया हड़प लेंगे, मुझे साइड पे कर देंगे, ये मुझे फिर ये एक्सप्लॉइट करेंगे। फिर सिद्रा ये जगह इनके लिए नहीं है। हाँ। देखिए ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू नो, हम यहाँ हड़पने नहीं बैठे हुए किसी को भी, हम ना आइडिया चोरी करने बैठे हुए हैं। वी आर हियर टू salvage the idea what they have, to groom the idea what they have, and to take the idea to a different level where you know they don't have the resources to take those ideas to। Yes. ठीक है ना? अगर वो ये समझते हैं तो पहली बात तो कि वो फिर वो मेरे ख्याल से अगर उस किस्म का बंदा होगा तो वो आएगा ही नहीं बाजार में। ठीक है ना? वो आएगा ही नहीं बाजार में, इसकी ये सोच होगी। I don't know, जी। अगर वो Can I add आएगा। one thing, Salman bhai? Salman bhai, जी। can I add one thing? Because I think we discussed that. I think it's a very important point. तो जब हमारी शुरू में बात हो रही थी JJ and Salman bhai के साथ, what we were discussing, Sidra, was कि यार we see some shows, right? कि somebody puts the money और 50% कंपनी का ले लेता है, right? They're called vulture investors, frankly speaking. So Yes. put yourself in a entrepreneur. आपकी 50% तो कंपनी वैसे ही शुरू में चली गई, सही है? Now you do the next round. आपकी कंपनी में स्टेक क्या रह गया आपका, राइट? So बिल्कुल। your goals are not aligned with the long-term success of the business that you helped build, and you can't replace founders with grit and passion, right? So what we discussed with JJ and Salman bhai शुरू में, yeah, we will limit it. So initially, अगर very early stage company is coming, we will target क्या 20-25% से ऊपर. We don't want to take equity. मतलब we will say कि यार if tomorrow the POs come and whatever, we will support you, but we will not take equity. And this was Salman bhai and JJ's idea, right? As well. The difference is the So people, like you've I've put it in spoken the with. design. You've put it in the design of the format कि there will be some way of countering the vulture investor ताकि आपका stake 100%, रहे. So that 100%. is one very important measure that you're making sure कि the trust stays. आपका founder का interest भी रहे, उसका stake भी रहे और वो काम भी करता Yeah, रहे. there's अच्छा no एक show out there. There's no जी. television channel. I've worked with pretty much all of them now, and probably more of them than I ever would. Is we are, but Salman bhai and JJ are running entertainment business. They could be running any other business. At the end of the day, at the crux, they are entrepreneurs, right? And they understand technology. Salman bhai has done a lot of technology, and it's the same thing as JJ. I think that's what sets this show apart from any other. We have worked with most of this, and not trying to diss them or something here, but I think that's also a big differentiator. Here you have people who are on your side actually. The reason for us creating a fund for Pakistani founders is because we want to make sure you get the money, which no one else is willing. हमारा 100 crore से ऊपर we have already raised for the show, inshallah ताला, between, अगर 5 लाख डॉलर आपके जजेस करेंगे, 1.5 million हमारा, it's like, $4 million. That's like 110 crore रुपए.
So, how many shows can guarantee that we will have that money upfront that we want to put the money in, right? So And then these are 3 months big of mentoring. promises, big opportunities, big bucks that we're talking about. एक दफा फिर let's go back to the basics, the SOPs of it. JJ, 1st August तक लोग apply कर सकते हैं, मगर वो apply कहाँ पे करें? Is the website the first point of contact, and can they be speaking to people? पहली application के लिए is it just a simple form, या इसके अलावा भी details उनकी तरफ से required होंगी? I think the only place where they can apply is our website, bazaaronary.com. आप उधर जाएं, you'll find all the answers there. If you have any query, you can write to us on the website only, and we'll get back to you. आपके लिए normal जो frequently asked questions हैं, वो भी वहाँ पे डले हुए हैं, so people can go through them and get the information. And इसके और उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. They cannot contact any of our members. We want to keep it very fair process. जितनी applications आ रही हैं वो process के through जा रही हैं to our teams, and they are being evaluated as we speak. And एक और question आया है कि when will be announcing the first, so Gurus. obviously gurus and उसके worry getting the right people on in place. And वही वाली बात है कि we want to ensure that whoever comes on board as a guru is also putting their investment in there. So we are working on that as at the same time. So they have to have skin in the game. If they don't have skin in the Exactly. game, then they're not in the game. But Salman और bhai, उसको फिर वो just पूरा on a legal process lighter से note, जी सलमान भाई, ऑन अ लाइटर नोट, अगर हमें पता चले कल को कि कोई एजेंट ऑफ बाजार एट ARY बन गया है और 5-5 हज़ार के फॉर्म्स बेच रहा है और लोगों को कह रहा है कि मैं आपको अप्लाई करके देता हूँ, तो सवाल ये है कि क्या आप उसको एक इनोवेटिव आइडिया के तौर पे एंटर करेंगे? बिकॉज उसने एक, देखे ना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो देख के उसको अवेल करने की कोशिश की. सो विल ही बिकम एन ऑटोमेटिक कंटेस्टेंट ऑफ बाजार? I'm sorry, the last part आप कट गया. कंटेस्टेंट ऑफ बाजार से पहले क्या कहा आपने? आवाज कट गई. मैं कहा सलमान भाई, अगर लोग एजेंट बन गए और 5-5 हज़ार में बाजार एट ARY का फॉर्म फिल करने लग गए और कहा कि जी हमारे थ्रू हम आपको अप्लाई करके देंगे, तो आप ऐसे, अगर कोई शख्स आपको मिल गया तो आप उसको रिवॉर्ड करेंगे उसके बिजनेस एक्यूमेंट पे कि यार देखो उसने बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो देखी, या आप उसकी फेंटी लगाएंगे? नहीं नहीं नहीं, फैटी हमारा काम फैटी लगाना नहीं है. बट ये है कि आपने पहले ही आइडिया डिस्क्लोज कर दिया, तो अब तो वो आइडिया के पैसे इसको मिलनी नहीं, इसको नहीं मिलेंगे इसको. ने कहा बट नाकालों से हाँ, होशियार. जेजे ने कहा है सिर्फ आपने खुद वेबसाइट पे जाना है. वेबसाइट पे आई बिल्कुल बिलीव English and बिल्कुल Urdu बिल्कुल. as well. If you have frequently asked questions, आपके पास होंगे. पाक लॉन्च और ARY डिजिटल की टीम से आप राब्ता कर सकते हैं उनके फॉर्मल वेबसाइट्स पे और लिंक्डइन पेजेस पे. Gentlemen, this was an absolute pleasure going through all the details. I would want to give 30 seconds or a minute to each one of you for your parting thoughts. बहुत सारे लोग इस वक्त tuned in भी हैं, ये हम मजीद शेयर भी करेंगे. All your key points have been covered. It's a $1 million opportunity, quite literally, pun intended, कि आप apply करें. If you have a brilliant idea, you can scale up, you can be mentored, and the world will be your oyster. So Ali, starting with you, your parting note to all those who are watching us. Yeah, I would encourage everyone who has an idea to apply, regardless of the sector and the stage they are in. And also, if they know someone else, I think maybe do them a favor. I think it's an opportunity of a lifetime. I think frankly speaking, if I were a very very early stage, I would love to apply and get mentoring from JJ and Salman Bhai. So I think it's an opportunity of a lifetime. So please do apply and share it with other friends and family who might be अच्छा, interested. क्यूट क्यूट बात ये है, इसको मैं क्यूट ही बोलूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सवाल में अपना पूरा बिजनेस आइडिया लिख के भेजा है. उन्होंने कहा है कि जी हम ये कर रहे हैं, हम ये करना चाहते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है. आई लव यू पाकिस्तान, पाकिस्तानी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड. बस यही काम आपने जाके ना वेबसाइट पे करना है ताकि आप फॉर्मली अप्लाई कर सकें. आई हैव पर्पसफुली नॉट स्पोकन अबाउट योर आइडियाज, ताकि आपका आइडिया बहुत सारे और आपसे safe बेहतर है. ना लिख लें. लेकिन अगर आप तक के पास ये जबरदस्त आइडिया है, प्लीज गो इन एंड अप्लाई. जे योर थॉट्स ऑन this and your parting note. Okay, just one more thing that I would like to highlight, one of the reasons of these startups to come in and participate in Bazaar is that ठीक है, उनको investment चाहिए. But please also understand this is going to be a major marketing opportunity. Because Yeah. अभी तक इसका जितना बस बन गया है, if a startup comes on Bazaar and they get a chance to showcase their product or their business,
you need to understand it's gonna go global, and उसकी जो रीच है वो इतनी हाई होगी कि इवन उस इन्वेस्टमेंट के बाद दे विल हैव अ वेरी गुड प्रूफ ऑफ रिकॉर्ड दैट दे कैन गो एंड सेल इट टू द पीपल दैट आई वाज देयर एट बाजार एंड दिस इज व्हाट अप्रिसिएशन आई गॉट एंड दिस इज व्हाट द मार्केटिंग एंड इवन लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स विल बी लुकिंग एट बाजार लेटर ऑन कि जी कौन से अच्छे स्टार्टअप्स आए थे, लेट्स कैच ऑन देम. सो इट्स जस्ट नॉट बाजार, इट्स मच बियॉन्ड बाजार. सो लेट्स स्टे इन टच एंड गेट दिस थिंग गोइंग. So what JJ is saying that this is only the beginning of your story. You have a lifetime opportunity to go big, to get funding on the show. लेकिन अगर ऐसा नहीं भी हुआ, this is going to be the archive of your brilliant idea. This is going to go global, and many people can look up to it. Salman bhai, you will have the last word. Siddharth, I would just like to say a couple of things before we leave. एक तो जिसने कहा कि it's a great marketing platform. You are not only promoting your product, you're promoting yourself, and you have an experience, a lifetime experience to be pre-mentored, and then come on the show. So you're getting mentorship for free. ठीक है ना? And then you're grooming yourself. So while the mentorship is happening, you will get a lot of other ideas how to scale your own business. Might you not you wouldn't even want to take investment. You might find an idea within that mentorship कि यार हमें ये आइडिया मिल गई है, अब हमको पैसे की जरूरत ही नहीं है, हम खुद कर सकते हैं, हम सेल्फ फंडिंग कर सकते हैं, you know. And this is not only for the startups, even companies who have actually have great ideas and they haven't been able to size themselves up to the world. That's the platform is for them also. तो ये मत समझिएगा कि यार कि मतलब कि सिर्फ अगर आईटी बेस्ड कंपनी है मेरे पास या मेरे पास कोई आइडिया है तो ही मैं आऊंगा, या मैं अच्छा लगता हूँ, शक्ल लगती है अच्छी मेरी, नहीं. दिस इज फॉर एवरीबॉडी. दिस इज फॉर कंपनीज who are making wires, who are making who has an idea to scale the cement production of Pakistan. Anything, physical business, FMCG, whatever. AIY in itself is in so many different businesses that we can help them nurture. For example, if we don't bring them to bazaar, we can on the sideline help them find investors who are savvy enough to do that business. So this is a platform I would tell the young entrepreneurs, I would tell the groomed entrepreneurs that the panel of people that we have on and off the screen, you will not get a panel like that again. This is an opportunity. You should catch this opportunity. वर्स्ट का वर्स्ट क्या होगा, फंडिंग नहीं मिलेगी ना, पर सीखने को बहुत जाएगा. Absolutely. To get funding, the goal should be to get into the show and through the show get funding. But चले अगर नहीं मिलती funding, so imagine the kind of learning you get. Imagine the kind of grooming you get. That is something which is people pay millions of dollars to go to school to get that 3 months, 4 months, 6 months course. So ये एक अच्छी opportunity, and I would want all the kids and all the business people, all the grooming entrepreneurs, and all the talented entrepreneurs to come to this platform and get a piece of it. I think this is a wonderful advice. खास तौर पे ये executive learning program है आपके लिए. This is like a leadership fellowship lessons that you're absolutely right. People pay thousands of dollars to actually get. But as a viewer, in the end, I must also add, thank you, gentlemen, for once again making me a part of this initiative, for allowing me to question you, to interact with you, and learn more about this idea that right now Pakistan is super, super excited about. और एक दफा फिर आपकी deadline 1st of August तक है. So if you have a great idea that you've put in action and you're looking to scale up, to go global, to raise funding, then 1st of August is still, when you can apply. Or खास तौर पे as a viewer, I would say I'm looking not just for great ideas that have a lot of business sense. I'm looking for ideas with heart and soul. कल मैंने एक बड़ी जबरदस्त चीज देखी. People call it the cafe of mixed orders. And the reason why they say that, क्योंकि आप वहां जाके कुछ भी खाना ऑर्डर करेंगे तो आपका वो ऑर्डर नहीं आएगा, उसके बजाय कोई और चीज आ जाएगी. नॉर्मली किसी और भी कैफे में आपको इस चीज पे बुरा लगेगा कि यार why did the server mess up my order? But then you realize that this is actually a cafe run by people with dementia. So they have a problem with forgetting things. लेकिन अपनी जो सबसे बड़ी weakness है, through a smart business idea, they made it their biggest strength. So we're looking for wonderful ideas like that, and I'm sure there is no dearth of that in Pakistan. I have my hopes high.
Once again, Salman Bhai, JJ, Ali, it was a pleasure to talk to you all and to have all the people who've been sending such wonderful questions. Inshallah Ta'ala, we will be seeing you on screens very soon. Aur usse pehle, don't forget to apply, pass this word to people who you think deserve to be on Bazaar at ARY. Till then, take good care of yourself. Khuda Hafiz. Thank you. Thank you. Thank you for that.